और सिंपली स्ट्रक्चर देखा था स्लाइडिंग जो फिलामेंट मॉड्यूल को डालू। अभी हमने स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म नहीं डिस्कस किया, सो उसके लिए अभी आप ज़्यादा जल्दी ना कीजिएगा। Contains many myosin heads, usually in doubles, as you can see. And myosin, the protein myosin, makes up the thick filaments. So each of these heads are part of a myosin molecule, you can say. And if we take a zoom or a portion of the thin filaments, this is what the thin filament looks like. And it's a bit more complicated in that the actin proteins are like twisted together like a helix. And there are also other structures, such as tropomyosin, which actually blocks the binding site of actin here, shown in green. And we also have troponin here in orange, which allows calcium to bind to it. And we'll see why these other structures are here. But essentially, if we zoom into one myosin molecule, here we have one myosin molecule. And the myosin proteins actually wrap around together to form the helix as well. And that is why we have two myosin heads in duplicates. And the myosin head contains two important sites. One site is for ATP, so an ATP binding site. And also the top here has an actin binding site, so it can bind to the actin proteins of the thin filament. So here we have the thin filament with actin proteins. And the actin, the thin filament is made up of actin subunits here. But an important note to make from this structure is that myosin heads can only bind to actin subunits if tropomyosin is moved. And as you can see, the tropomyosin has moved here. And it's moved because calcium binds onto this orange structure, the troponin. And so let's look at this in more detail. So myosin heads can only bind to actin if tropomyosin is moved. So here we have the thin filaments consisting of many actin subunits. And we have the structure in orange here, troponin, and tropomyosin, as shown, is blocking the binding of myosin onto actin. And here we have two duplicates of myosin heads shown in red. And it wants to bind to the actin subunits. And when ATP comes on, ATP will bind onto the ATP binding site of the myosin. And this causes myosin to want to bind to actin subunits, but it can't because of tropomyosin, because tropomyosin blocks the actin's binding site, preventing the binding of myosin heads onto actin subunits. And so if we introduce calcium, if calcium comes along from somewhere magically, calcium will bind to the troponin, the orange part, moving tropomyosin out of the actin and myosin connection. And so here we have the myosin heads again, and it has ATP has been used, and it has ADP, so it has energy. And here we have the actin, the thin filaments with the actin subunits. And as you can see, calcium has bound onto the troponin. And this has caused tropomyosin to move away from the myosin binding site on the actin subunits. And so here we have tropomyosin moving away from the myosin binding site, which allows myosin heads to attach to the actin subunits. And so myosin heads can bind onto the actin subunits because tropomyosin has moved away from the binding site of myosin on actin. And so because of this enables the myosin molecules in red to pull the thin filaments towards the center of the sarcomere, towards the M line. So it's pulling it. And this is why it needs ATP. And when this occurs, essentially when myosin moves, actin will generate tension and contraction in muscle, essentially. So again, myosin will pull actin towards the M line, and myosin itself will then move towards the Z line. And what does this mean? Let's look at a big picture. Let's look at firstly a relaxed state when nothing is happening, when no calcium and no ATP is around. So here we have a sarcomere
which is in between, which is from a Z disc to another Z disc, and we have the M line in the middle. And this is a relaxed sarcomere in a relaxed state. And so when ATP and calcium comes along, this will cause myosin heads to pull thin filaments towards the center of the sarcomere, towards the M line. So if you can imagine, here we have a fully contracted sarcomere, and this is in a tense state, let's just say. And so in a fully contracted sarcomere, the myosin heads will pull the thin filaments towards the center of the sarcomere, towards the M line. And so because of this, the sarcomere will become shorter. And this is known as sliding filament theory. And the sliding filament theory states that each sarcomere shortens as the thin filaments slides closer together between the thick filaments, so that the Z discs are pulled closer together. So what this means is that essentially the Z discs are coming close together like so. And this is what contraction looks like in a intramolecular level. So now Okay, so this was the revision of the yesterday's lecture, and today we'll go ahead. If you remember, we were talking about the structure of the myosin and the actin filaments. And the myosin filament is basically constitutes the myosin molecules, and they intertwine or they twist around each other, and then they form a myosin myofilament. There are around 300 myosin molecules in one myosin myofilament. And there is this shaft area which all join together to form the main segment of this myosin filament. And then the globular heads which move towards the actin, or they project outward from the myosin myofilament. The actin myofilament is composed of F-actin strands, which are composed of actually the G-actin molecules. The G-actin molecules, they join together and then they form the F-actin strands. There's another component of the actin myofilament, that is the tropomyosin. And tropomyosin is also twisted around this F-actin strand, but it is actually covering the affinity points, the points which will join with this myosin head. Actin filaments के ऊपर ये जो एफ एक्टिन है, इसके जो जी एक्टिन के मॉलिक्यूल्स हैं, इसके ऊपर मौजूद होता है एक पॉइंट which has the affinity or the attraction towards this globular head of the myosin, and that is usually covered with the tropomyosin, another protein which covers this. Otherwise, ये अगर uncovered रहेगा, there is a strong affinity of the myosin. Whenever the calcium is there and the ATP is there, then this will combine with this area. Otherwise, is हर वक्त contracted state में नहीं रह सकता. So, tropomyosin is basically covering this. And then there is another protein which is called as the troponin, and it has three parts. One part is the I part or the A part, which has the affinity with the actin, and then the second is the calcium or the C part, and that has the affinity with the calcium. Whenever the calcium comes, it attaches to that area. And the third part is attached to the tropomyosin. So whenever there is calcium available in this area, sarcoplasm में, तो calcium combine करेगा to this, and वो tropomyosin, इस पे एक conformational, whenever two proteins they join together, there is a conformational change. Conformational change means structural change हो जाता है. Structural change की वजह से ये slightly इसको इस तरह मूव कर देगा. ये जो ट्रोपोमायोसिन है वो स्लाइड आउट कर देगा. स्लाइड आउट या स्लाइटली इस तरफ मूव कर जाएगा या इस तरफ मूव कर जाएगा, जिसकी वजह से जो अफिनिटी पॉइंट्स हैं टू द मायोसिन हेड वो अनकवर हो जाएंगे. जब वो अनकवर हो जाएंगे तो मायोसिन मॉलिक्यूल से कंबाइन कर सकेंगे. यहाँ तक सबको समझ आ गई? Yes, ma'am. Okay, what is a sarcomere?
दिस इज अ यूनिवर्सिटी क्वेश्चन एंड बेसिकली आपके वाइवे में ये बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है जो पूछा जाता है, सारों को ही पता होगा। सार्कोमेयर इज between the two protein structures which are called as a Z disc या Z disc. Z disc के दरमियान में एक A band होता है. A stands for the anisotropic, which is a fancy way है कि आप कहेंगे कि ये dark आता है under the microscope. And A band has a zone of overlap. ये area है of overlap. This actin is overlapping this myosin. Whole of the area is not overlapping the actin and the myosin. इसके center में सिर्फ myosin filament होता है. इसके corners में अगर आप देखें तो there is this overlapping of the actin and the myosin. So this is between the thick and the thin filaments. And then there is an eighth zone. Eighth zone has only the thick filament. The portion of the sarcomere which does not contain any thick filament is called as the I band. This area from this to another myosin filament, this is called as the I band, और इसको हम light I band भी कहते हैं. इसके अंदर बहुत सारी प्रोटीन्स हैं, इसमें टाइटिन भी है, इसमें Z डिस्क भी आ रही है, इसमें एक्टिन भी है, बट देयर इज नो थिक फिलामेंट इन इट. एंड इसको हम आइसोट्रोपिक कहते हैं, लाइटर एरिया शो होता है. एक्चुअली इट इज पार्ट ऑफ टू सार्कोमेर्स एट वंस. एक सार्कोमेर इस तरफ से और एक इस तरफ से. इन द मिडल देयर इज एन एज जोन. एज जोन जो एंड्स हैं एक्टिन के, वहां से लेके दूसरे एंड तक, दैट इज द एज जोन. और इसके सेंटर में देयर इज दिस एम लाइन. एम लाइन इज नॉट जस्ट दिस जोन, तो वो एरिया है जो आपको नजर आ रहा है. एम लाइन बेसिकली इट्स अनदर प्रोटीन व्हिच इज कनेक्टिंग द थिक फिलामेंट्स. दिस इज एन आई बैंड जिसमें आपको थिन फिलामेंट्स नजर आ रहे हैं, इसमें कोई थिक नहीं है. दिस इज एन एज जोन जो सेंटर वाला था, इसमें आपके थिक फिलामेंट्स नजर आ रहे हैं. दिस इज एन एम लाइन. एम लाइन इज बेसिकली ये एक्सेसरी प्रोटीन्स हैं जो आपस में इसको कनेक्ट किया हुआ है मायोसिन को, और दिस इज अ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन जाता है. सेंटर में एम लाइन है और साइड पे आपके मायोसिन की फिलामेंट्स आते हैं. आई विल शो यू अनदर वीडियो और एनिमेशन जिसमें आपको ये क्लियरली नजर आएगा. ओके, आपको अभी कंटेंट नजर आ रहा है या नहीं? कैन यू सी द No, ma'am, कंटेंट? अभी नहीं आ रहा. नो No, मैम. ma'am, अभी No, नहीं आ ma'am. रहा. नाउ अब नजर आ रहा है? Yes, ma'am. ओके. जी मैम. यस मैम. बीच में आई डोंट थिंक कि नेट की कोई प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से हो जाता है. अच्छा, लुक एट दिस सार्कोमेयर. दिस इज अंडर फोटोग्राफिक इमेज ली गई है, एंड दिस इज द एम लाइन जो आपको नजर आ रही है इन दिस एरिया, एंड दिस इज द एज जोन. सो एम लाइन इज इन द सेंटर ऑफ दिस एज जोन, और एज जोन मैंने अभी आपको बताया इट इज एट द एंड्स ऑफ द एक्टिन फिलामेंट्स. देन देयर इज दिस Z डिस्क. Z डिस्क पे अटैच है थिक फिलामेंट्स. द थिक फिलामेंट्स इस तरह ज्वाइन करती हैं, और इसमें जो आप कह रहे थे कि माइक्रोस्कोप में लाइटर एरिया नजर आता है तो आइसोट्रोपिक होगा. तो दिस इज अ लाइटर एरिया. इन द सेंटर देयर इज दिस Z डिस्क, एंड दिस लाइटर एरिया इज बेसिकली बिटवीन टू सार्कोमेर्स. एक सार्कोमेर इज फ्रॉम वन Z डिस्क टू द नेक्स्ट Z डिस्क. तो ये जो लाइटर ये एरिया आ रहा है, ये इस सार्कोमेर का और इस सार्कोमेर दोनों को ज्वाइन कर रहा है. अगेन यू लुक एट हेयर, दिस इज, ये जो आपको इंडिगो कलर नजर आ रहा है, अगर हम इस टाइप पे क्रॉस सेक्शनल लेते हैं तो यू कैन सी ओनली द एक्टिन मायोफिलामेंट्स. And if you take the cross section from this area, it shows the myosin myofilaments, and they are covered all around by the actin myofilaments. So सिर्फ ये सोचना कि इस तरह है, it's not, it's a 3D image जो basically ये आपको overall cover कर रहा होता है. ये circular है. myosin अगर आपको याद हो कि कल मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था कि मसल फाइबर का सर्कुलर एरिया है, तो ये एज सच उसको पूरा कवर कर रहा होता है.
Then you can see over here, अगर आप यहाँ से सिर्फ क्रॉस सेक्शन लेते हैं, you can see only the myosin filaments. अगर आप सेंटर से लेते हैं, then there is this center M line and the myosin. M line, this is the M line and उसके इर्द गिर्द myosin है और इसने इसको ऐसे पकड़ा हुआ है या अपने साथ अटैच किया हुआ है ताकि मायोसिन फिलामेंट्स जब मूव करते हैं तो वो स्कैटर ना हो, डिस्पर्स ना हो जाए. सी अगेन, अगर हम स्टार्ट से शुरू करें, व्हाट इज द सार्कोमेर? सार्कोमेर इज फॉर्म, एनीबॉडी? The region of myofibril from one Z to from one Z line to another Z line. Good. Then there is an A band which consists of the thick filaments. Then there is an I band. What is an I band? Consists of thin filaments. Thin filaments, and in the center there is a Z line, and this is basically of the two sarcomeres. ठीक है? अच्छा, center of this जो A band है, यहाँ पे एक H zone है, and H zone only has the myosin filaments. Thick band. इसमें thick filaments, good. Thick filaments हैं और इसमें सिर्फ myosin आपकी filaments हैं. इसके center में this is a M line, और M line अगर आप इसको देखो, this is the actin, ये जो brownish आपको नजर आ रहा है, और ये hexagonal, उसने hexagonal means six sided. Six sides से myosin myofilaments they are gathered all around it. This is basically a picture जो आप लोग draw कर सकते हो एग्जाम में. Z line to another Z line, this is a sarcomere, these are the thick filaments, and the red line shows the thin filaments. In the center there is an H zone, और आप center में इसके बिल्कुल एक M line भी draw कर सकते हो. There मैंने आपको कहा था, there is the sarcolemma. Sarcolemma is the plasma membrane of the muscle. Muscle के लिए हम cell membrane नहीं use करते, हम word sarco या mycium या myo ये लफ्ज यूज करते हैं. जब भी सार्को आए तो ये थिंक ऑफ कि ये चीज मसल में होगी, और मायो तो सबको समझ आ ही जाता है. So each muscle fiber has many T tubules. Or what are these T tubules? Basically, this is a sarcolemma or the plasma membrane of the muscle fiber, and it is invaginating inwards, and this forms a T tubule. इसकी वजह से जब एक्शन पोटेंशियल आएगा और वो इस एरिया को एक्साइट करेगा, तो बाय द हेल्प ऑफ दिस टी ट्यूब्यूल इट विल गो इनसाइड आल्सो. और यहाँ पे देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रायड. ट्रायड मीन three things they get together and it forms a triad. What are those three things? In the center there is T tubule, and on the sides there are the cisterna of the sarcoplasmic reticulum. Cisterna means the dilated sac, or any dilated area is called as a cisterna. Look at here, this is a triad forms of two terminal cisternae with one T tubule branch. What is a T tubule? It is just an invagination of the sarcoplasmic sarcolemma. This is another picture. ये आपका एक मसल फाइबर है, इसमें आप मायोफिब्रिल को निकला है, इसको आपने मैग्नीफाई किया. Then there is this A band, I band. I band के सेंटर में Z disc. A band में there is myosin filaments, H zone. Then there is this M line. What is this? This is sarcoplasmic reticulum, and this sarcoplasmic reticulum is forming a triad with the T tubule and this dilated ends of the sarcoplasmic reticulum, and there are multiple mitochondria. We need mitochondria to provide the energy, to provide the ATP. This is another picture of the myofibril showing the T tubules, which are just the invagination of the the sarcolemma, and then there is this sarcoplasmic reticulum, जो उसको पूरी तरह से, reticulum means a meshwork, और रेटिकुलम ने उसको पूरी तरह से कवर किया होता है, because this is required for the calcium. Myofibrils, they are contractile organelles of the myofiber. 6 types हैं. एक्टिन और मायोसिन जो होती है वो कॉन्ट्रैक्टाइल होती है,
जो ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन है वो रेगुलेटरी प्रोटीन होती है. देयर आर सम एक्सेसरी प्रोटीन्स आल्सो जिसको हम टाइटिन और नेबुलिन भी कहते हैं. ये एक हम नया वर्ड आज ऐड कर रहे हैं. Actin and myosin, they are the contractile proteins. Regulatory proteins are the tropomyosin जो regulate करता है, basically cover किया हुआ उसने attach जो myosin binding site है. और troponin जो उसने कैल्शियम को अटैच करना है और फिर मायोसिन को मूव करना है ताकि मायोसिन अनकवर कर दे. Then there is an accessory protein. One is the titin, the other is the nebulin. This is another picture. मेरा ख्याल है जब आप मुझे ये कहेंगे कि अब हमें समझ आ गई, हम आगे चलेंगे. ये तो सबको समझ आया है मायोफिब्रिल है. इसको अगर हमने मैग्नीफाई किया तो दिस इज अ जेड डिस्क, अनदर जेड डिस्क, सेंटर में देयर इज एन M9. दिस इज द मायोसिन मायोफिलामेंट. Thank you. This is an actin filament and that is attached to a Z line. Then there is this green color, if you see, there is this titin which is attaching the myosin myofilament to the Z disc. This is the titin filament which is attaching the myosin myofilament. Basically, ये इसको overall वहीं से इंटरट्वाइन किया होता है और इसको अटैच करा होता है टू द Z disc. सेंटर में आपका M9 है और M9 is just not the line which is अंडर द माइक्रोस्कोप. अगर आप देखें कि आप कहेंगे जी ये लाइटर एरिया या डार्कर एरिया और M लाइन जो है ये कोई सिर्फ लाइन सी नजर आती है. इट्स नॉट लाइक दिस. इट्स अनदर प्रोटीन जो बेसिकली आपके जो मायोसिन फिलामेंट्स हैं इनको उसने पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है, चेन लाइक उसको कवर किया हुआ है ताकि वो इर्द गिर्द कहीं डिस्पर्स ऑफ ना हो जाए. Then ये आपको ट्रोपोनिन नजर आ रहा है. दिस इज एन एक्टिन चेन which is composed of the G-actin molecules and these are the tropomyosin molecules. अच्छा, I thought हमारा खत्म हो गया. मैम ओके जी, हाँ जी बेटा. मैम पीछे एक स्ट्रक्चर दिखाया गया जिसमें ये दिखाया गया कि ईच मायोसिन इज सराउंडेड बाय द 6 एक्टिन ऑन वन साइड. तो इसकी समझ नहीं आई. मैं आपको बताऊंगी, अभी तो मैंने आपको कहा ही नहीं, अभी आप फिक्र ही नहीं करें. मायोसिन के साथ ये वाला स्ट्रक्चर है ना मायोसिन का, इसके इर्द गिर्द ये सिर्फ आपको एज सच पेपर में नजर आ रहा है. जब मैं आपको उसको 3D इमेज दिखाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा. अभी मैंने वैसे आपको क्रॉस सेक्शंस दिखाए थे लेकिन मैं आपको एनिमेशन में ही दिखाऊंगा. What is a titin and what is a nebulin? Nebulin is an inelastic giant protein और जो वो nebulin है वो अलाइनमेंट कर रही है ऑफ दिस एक्टिन. ये फ्री फ्लोट नहीं कर रहा. ये ऐसे नहीं है कि ये ऐसे ही मौजूद है और इस तरफ तो अटैच नहीं है तो ये फिर तो इस एरिया को फ्री फ्लोटिंग कहेंगे और इस एरिया को फिक्स कहेंगे. ऐसे होना चाहिए था ना, लेकिन ये फ्री फ्लोट नहीं कर रहा. ये स्पेसिफिकली एक स्टेट में रहता है. इस अलाइनमेंट के लिए देयर इज अ नेबुलिन जो इसके सेंटर में से इसको गुजर रही है, जिसकी वजह से उसने उसको सॉर्ट ऑफ स्टिफ रखा हुआ है या उस एरिया पे रखा हुआ है कि वो इसी जगह पे रहेगा. ये नहीं कि ये यहाँ से इस जगह यहाँ और ये फिर इस तरह आ जाए और फिर ये इस तरह मूव कर दे. Got it? So nebulin is basically for the alignment of the. What is a titin? बहुत करेंगे, यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक नजर आता है. So one comes to think कि probably it is attached to the end and then to the Z disc. It is not like this. This is passing from one disc to another और ये एक titin ऐसे करके इसको twine किया हुआ है और ये throughout जाके यहाँ पर attached है, जिसकी वजह से ये इसको elasticity भी provide करता है और इसको stabilize भी करता है. This is मैम जी बेटा. मैम ये जो टाइटिन है ये नेबुलिन की एक्सटेंशन है? नहीं, नॉट एट ऑल. टाइटिन और नेबुलिन टोटली अलग है. फिर से देखो, नेबुलिन जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी एक्टिन में मौजूद है. जो टाइटिन है बेटा वो देखो वो मायोसिन के साथ अटैच्ड है. वो मायोसिन को अलाइन कर रहा है, मायोसिन को स्टेबलाइज कर रहा है. तो टाइटिन
मायोसिन के साथ है, MT बना लेते हैं हम इसको किसी तरह याद रखने के, और AN बना लेते हैं, एन और MT ऐसे, ठीक है। आप इसका निमोनिक कुछ और बना लो। जो नेबुलिन है वो एक्टिन के साथ है, इसमें भी इन है, इसमें भी इन है, लेकिन टाइटिन में भी इन है। आई थिंक ऑफ एनी निमोनिक जो प्रोबेबली आपको याद रहे। नेबुलिन इज विद द एक्टिन एंड दिस टाइटिन इज विद द मायोसिन। अगर आप यहाँ पे देखो तो आपका ख्याल है कि ये इसके साथ कंटिन्यूअस है, बट लुक एट दिस जेड डिस्क, दिस इज अ जिगजैग, जिसकी वजह से यहाँ पे दूसरा सार्कोमेर है और इसका यहाँ पे थिक फिलामेंट आ रहा होगा। गॉट इट? इसलिए आपने प्रॉब्लली कंफ्यूज किया है कि ये इसके साथ ही शायद अटैच्ड है। आपने इसको, इस चीज को, स्ट्रक्चर को समझने के लिए यू विल थिंक ऑफ कि ये जेड डिस्क है और दिस इज अनदर वन। इस जेड डिस्क के इसके दरमियान में दिस इज एन एक्टिन, एक्टिन के सेंटर में आपको नेबुलिन नजर आ रहा है जो इसको स्टेबलाइज या अलाइन कर रहा है। और इस एरिया में जो फादर अवेयर है ऑफ दिस zigzag एरिया, देयर इज दिस मायोसिन फिलामेंट एंड देन देयर इज दिस टाइटिन इन द सेंटर। गॉट इट? आप समझ आ गई? यस ओके। अगर आप अपने मसल को मूव करते हो, देयर इज दिस कॉन्ट्रैक्शन एंड देन देयर इज दिस शॉर्टनिंग। कैन यू सी दिस एनिमेशन? कैन यू सी दिस मूविंग? yes ma'am Okay, so this is basically what? This is the pulling of this Z disc and another Z disc, and this is pulling of the sarcomere together. Actin is moving to another actin, और ये सेंटर में बिल्कुल ऑब्लिटेट भी हो सकता है और थोड़ा सा दूर भी रहता है। और ये मायोसिन की फिलामेंट है with the globular heads. Or look at the tension. Whenever this contraction is taking place, the tension is developing at the center and you get the movement. अगर हम इसको बुकिश या एनिमेटेड या 2D पिक्चर में ही देखें तो ये anybody who can I'll point out my cursor and you will tell me कि ये कौन सा एरिया है। So what is this area? Can you see my cursor? What is this area? मैम Z line। नहीं, आपको C line आप Z line। ये what is this red area? मैम thick filament। Thick filament। और अगर मैं कहूँ कि from this area to this area, this is called as this area to this area. A band. And if I say it is from this area to another end of the actin filament, then this is a I band. This is a I band. From this area to this area, दूसरी भी actin filament आ रही है to that end, I band. इसके सेंटर में आपको Excuse me मैम, this helical structure, ये जो spring वाला structure है, ये कौन सा है? ये what is this बेटा? टाइटिन फिलामेंट्स। गुड। टाइटिन फिलामेंट। एक्टिन के सेंटर में कौन सा प्रोटीन का स्ट्रक्चर होगा जो इसको अलाइन करेगा? नेबुलिन। एक्सक्यूज मी मैम, बना देते हैं हम इसको एक्टिन के साथ नेबुलिन। एंड दिस मैम जो ये वाला, अच्छा अगर मैं आपको कहूँ कि इस एरिया से एंड ऑफ द एक्टिन टू अनदर एंड इन द सेंटर ऑफ द सार्कोमेर, दिस जोन इज कॉल्ड एज H zone। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन पूछ लें। H zone मैम। दिस इज एन H zone। मैम जब हम एक्टिन और मायोसिन या थिक और थिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करते हैं तो हम उसमें नेबुलिन और टाइटिन को उसका पार्ट कंसीडर नहीं करते, बाद में हम उसे अलाइनमेंट में यूज कर रहे हैं, तो उन्हें उसके स्ट्रक्चर में क्यों नहीं स्टडी किया जाता? किया जाता है, लेकिन आपको समझाने के लिए हम आहिस्ता आहिस्ता समझाते हैं। एकदम से सारे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज कर देंगे तो हर बच्चा एक पहले लेक्चर में या पहली दफा में ग्रास्प नहीं करता। हमने जब बताना है तो हमने कहना है देयर आर 2 कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, मायोसिन एंड एक्टिन, देयर आर 2 रेगुलेटरी प्रोटीन्स, ट्रोपोमाइसिन एंड ट्रोपोनिन, एंड देन देयर आर the accessory proteins or the alignment proteins of which help them, then there are titin and nebulin. अगर आपने वाइवा देना है, start with this.
अगर आपसे पूछा जाए तो कुछ बच्चे सिर्फ मायोसिन और एक्टिन कहते हैं, बट वी डू नॉट डिस्करेज दोज स्टूडेंट्स। बहुत बच्चे पहली दफा में ग्रास्प नहीं करते, इसलिए मेरा तरीका यही होता है कि मैं जरा आहिस्ता आहिस्ता वर्ड्स को एंटर करती हूँ ताकि आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आती रहे। हर रोज नई बात सीखेंगे ना, पिछली को मैं याद रखते हुए। अच्छा, अब हम बात कुछ कर रहे थे, वो जरा सुन लेते हैं। अब हम जो सेंटर में है, देन देयर इज दिस एम लाइन, और मैंने आपको कहा एम लाइन इज नॉट ओनली द लाइन, इट इज अ प्रोटीन स्ट्रक्चर व्हिच इज एक्चुअली कंट्रोलिंग दिस मायोसिन एट दिस सेंटर एरिया। ठीक है। अच्छा, अब अगर शॉर्टनिंग होती है सार्कोमेर की, there is this muscle contraction, there is shortening of the sarcomere, and the Z is from one area and this is shortened. ये किस तरह मूव करता है? What happens to the Z is they come together, they come closer to each other. What happens to the length of the A band? Anybody? कांस्टेंट रहेगी मैम। Constant. So what is what will happen to the length of the eighth zone? मैम वो खत्म हो जाएगा। डिसअपीयर हो जाएगा। अच्छा, what happens to the length of the I band? मैम वो कंट्रैक्ट करता है क्लोजर टू ईच अदर। I band नहीं चेंज होगा? होगा मैम। देखो बेटा, अभी एक बेटी ने बताया कि ये वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। हाउ कम आप कह रहे हो कि वो छोटा नहीं होता? तो फिर यहाँ से यहाँ तक ऐसे करीब आ गए। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ लिया गया ऑफ द सेम सार्कोमेर। तो अगर आप सेंटर में देखो तो आपको ये वाली Z डिस्क है और ये आपको डार्कर एरिया मायोसिन का नजर आ रहा है, ये लाइटर आ रहा है। अब इसमें अगर आप कहो कि इसमें मुझे टाइटन नजर नहीं आ रहा या नेबुलिन नहीं नजर आ रहा, तो अगर मैं आपको कहूँ आज से 20 साल पहले हमें एक्टिन और मायोसिन तो पता था, हमें टाइटन और नेबुलिन नहीं पता था। बाद में हमने, जब हमारे पास फैंस की मशीन्स आई तो हमने उनको देख लिया। अगर आप ये देखें, ये वाला, दिस इज चेंज ऑफ द सार्कोमेर ड्यूरिंग अ रिलैक्स स्टेट एंड अ कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट। ये ए बैंड है जो सेम रहेगी। दिस लाइन, द डॉटेड लाइन shows that the A band remains constant. The Z disc is moving towards the A band, towards the center. You would say there's shortening of the Z area, there's shortening of the sarcomere by which the Z line is moving towards the center. M line वैसे ही रहेगी। Eighth zone था end of this actin filament to the end of this in the same sarcomere. Eighth zone यहाँ पे इतना था और ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया है और it is coming towards the end of the one actin to this. अब ये कितना छोटा हो गया एक जोन। अगर हम देखें कि आई बैंड को क्या हो रहा है, अभी एक बच्ची ने कहा वो सेम रहेगा, अब उसको पता चलेगा लाइक लुक एट दिस आई बैंड बेटा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, एंड लुक एट दिस आई बैंड, ये कितना शॉर्ट हो गया है। क्यों शॉर्ट हो गया है? Because this actin filament is sliding over here. जो मायोसिन है वो ऐसा रहता है, लेकिन ये जो अभी मैं बताऊंगी जब आपको स्लाइडिंग थ्योरी, तो दिस एक्टिन इज मूविंग टुवर्ड्स हेयर, क्योंकि वो इसके ऊपर स्लाइड कर रहा होता है ऑन द मायोसिन फिलामेंट। यहाँ तक अगर समझ आ गया तो हम आगे चलते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पे फिर एक और वीडियो देख लेते हैं। मैम जो 8 जोन है वो कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाता है या शॉर्ट हो जाता है? बस शॉर्ट हो सकता है और कंप्लीटली डिसअपीयर तब हो सकता है जब कोई बहुत ही मार्क्ड उसकी कॉन्ट्रैक्शन आएगी तब। इसलिए मैं एक मिनट, लेट मी लुक फॉर कि कोई हमें सार्कोमेर का मिल जाएगा। मैम जी
मैं इधर ही हूँ, मैं जी लाइन आपके और हाँ जी, सी लाइन को क्या हो जी गया? लाइन और एम लाइन है, जी लाइन और एम लाइन ये ऊपर नीचे से आगे प्लाज्मा लेमा के साथ अटैच है ताकि अलाइनमेंट कर सकें थिन फिलामेंट की। नहीं, ये एज सच मैं आपको दिखाती हूँ। ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम। Yes, ma'am. Watch this. Does this work? If you decide to lift your arms up in the air, what is happening on the molecular level that produces this motion? It's not magic. It's just a staggering amount of chemistry. So let's dive back down into those muscle fibers and get a closer look. As we recall, any skeletal muscle is made of fascicles, and each fascicle is made of muscle fibers, which are the individual multinucleated muscle cells. From there, we can zoom in farther on one of these myofibrils, which are in turn comprised of myofilaments arranged into sarcomeres. And this is the contractile unit, the one that lets muscles do what they do. Now let's get a closer look at these structures, because this is where all the action happens. Looking at a sarcomere, we can label a few regions. We can see these darker A bands and the lighter I bands, which are aligned and responsible for the striated appearance of skeletal muscle. Within each A band, we can find a lighter region called the H zone, and this H zone is split down the middle by something called the M line, made of a protein called myosin. The I bands are also split down the middle by a region called the Z disc. We can identify an individual sarcomere as being a section from one Z disc to the next, and this is the functional unit of skeletal muscle. If we zoom in even more, we can see the myofilaments that make up these regions. As we discussed previously, the thick filaments contain myosin, and these extend across the A band, connected at the M line. The thin filaments contain actin, extending across the I band and into the A band. There are also elastic filaments made of titin, spanning from the Z discs to the thick filament, and then continuing on, acting as the core of the thick filament. Now let's zoom in even further on these two main types of filaments. Myosin is a protein with two globular heads pointing outwards and a long tail, which contributes to the structure of the filament. The heads are the site of all the activity, since there are ATP binding sites, as well as actin binding sites, meaning this is where the thick and thin filaments will interact by making cross bridges. It's important to note the lack of myosin heads in the center of the sarcomere, just as there also are no thin filaments. Speaking of those, as we said, they are made predominantly of actin, and two actin filaments will twist together to form the backbone of the thin filament. Each actin subunit has an active site where myosin can bind, and when a muscle fiber is relaxed, these are blocked by spiraling strands of tropomyosin. There is also troponin, a globular complex of 3 polypeptides, one of which binds to actin, one of which binds to tropomyosin, and one of which binds calcium. Beyond this, we must be aware of the Sarcoplasmic Reticulum, a series of tubules that surround each myofibril. These regulate levels of calcium, which is needed for muscle contraction through storage and release. This structure includes the T tubules, which sit at each A-band, I-band junction, encircling each sarcomere and helping signals reach every region of the muscle cell. Examine each structural component. Let's describe how everything works using the sliding filament model of contraction. This says that when the nervous system stimulates muscle fibers, the myosin heads on the thick filaments will interact with the binding sites on the actin subunits. These subunits
will form and break several times as the thick filaments pull the thin filaments in towards the center of the sarcomere, thus pulling the Z discs towards the M line. The I bands shorten and the zone disappears. The overall effect, A bands from adjacent sarcomeres get closer together, so the entire muscle cell will shorten. This is the mechanism by which muscles contract. Now the question is, how is all of this activity initiated? As we said, this begins with a signal from the nervous system. We will examine that system in detail a bit later, but for now, we can just examine the interface between the nervous system and a skeletal muscle. This is called the neuromuscular junction. Each muscle fiber has one, and these sections, called axon terminals, are nearly touching the muscle fiber, separated only by a thin space called the synaptic cleft, where the muscle produces junctional folds within the postsynaptic membrane. The axon terminal has lots of synaptic vesicles, which are like little bubbles containing acetylcholine, which is a neurotransmitter. When a nerve impulse reaches the end of an axon by a mechanism we will discuss later, the axon terminal will release acetylcholine into the synaptic cleft. The junctional folds contain acetylcholine receptors, so these will bind to the approaching acetylcholine, which causes a conformational change. This protein will then act as an ion channel, which allows for sodium ions to enter and potassium ions to leave, although not in equal number. Sodium will cross the membrane in greater quantity, and this affects the membrane potential, or the potential difference across the membrane. For more information on electric potential, check out my physics tutorial on this subject. Otherwise, we just need to understand that the way that positive and negative charges are distributed within a structure can be a driving force for a particular process. Prior to the opening of the ion, बेटा मार्क आउट है बेटा mark your attendance. Can you see the form? Yes. Okay, that's first year practical. First year practical. नहीं अच्छा आपको नहीं आलिया आपने बात करनी है कोई? आलिया प्लीज म्यूट योरसेल्फ. अच्छा, आज का लेक्चर सबको समझ आ गया? यस मैम.
ओके, अब हम ये बेसिकली हम स्लोली आगे चलेंगे, जैसे ही आप कहते जाएंगे कि अब हमें समझ आता जा रहा है, हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट वीक में मैं लेक्चर लूंगी, आई डिसाइड द डेज एंड देन आई टेल यू। आपने ट्यूटोरियल के लिए तैयार कर लेना है। यू वुड बी आस्क्ड कि आपको पता होना चाहिए द स्ट्रक्चर, यू शुड नो द sarcomere changes and what are the constituents of the sarcomere. स्लाइडिंग फिलामेंट मैंने अभी आपको ज्यादा नहीं कराई, बट अगर आप थोड़ी बहुत समझ आ गए इट्स फाइन विथ यू, ठीक है? ओके मैम। ओके, और नेक्स्ट वीक में हम एक क्विज भी लेंगे। पहले लेक्चर में नहीं लूंगी, मैं सेकंड में लूंगी, ताकि मैं आपको बता दूंगी कि कौन सा आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है और फिर हम उसके अकॉर्डिंगली लेंगे। आज शायद कम बच्चे हैं, दे आर ओनली 186, तो फिर मैं द मोमेंट मुझे 186 रिसीव हो जाएगा। सिलेबस किस चीज का? क्विज का? हाँ, मैं आपको इंशाल्लाह सिलेबस बेटा आउट ऑफ कोर्स तो पूछना नहीं है, इट विल बी जस्ट लाइक अ प्ले, और सिलेबस यही होगा जो हम आजकल लेक्चर्स में पढ़ रहे हैं, ठीक है? ओके मैम। वो कोई मैं कोशिश करूंगी कि उसको थोड़ा सा अगर एनिमेटेड बना सके। एक्चुअली इट्स ऑल द प्रो वर्जन जिसमें बनता है, लेकिन अगर पॉसिबल हुआ तो आई वुड लाइक दैट के हम इसको एनिमेटेड में करेंगे। I've received 170. अगर आप कहते हो we've got time, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। नहीं मैम, अब काफी टाइम हो गया है। अच्छा, तुम्हारा लेक्चर अगला कौन सा है? एम्ब्रियोलॉजी। बायोलॉजी कौन सा होता है बेटा लेक्चर? मैम एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी, अच्छा। तो ये स्ट्रक्चर तो जरा देख लो ना, ये क्या है? ये दिस इज अ ट्रोपोमायोसिन जो कवर कर रहा है, और ये मायोसिन हेड पे 2 पॉइंट्स हैं। एक कौन सा? एक एटीपी बाइंडिंग साइट और एक एक्टिन। तो जो एक्टिन वाला है वो इसके साथ अटैच हो रहा है और होने वाला है, और ये जो एटीपी वाला है वहाँ पे वो एटीपी टूट के एटीपी बन चुका हुआ है, ठीक है? और ये वाला अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो यू कैन सी द एनिमेशन ऑल्सो। दिस इज द वे जो पावर स्ट्रोक हो रही है। कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रही है कि दिस इज द मायोसिन हेड। ये बिल्कुल प्रिमिटिव सी इमेज है, मैं आपको बाद में और दिखाऊंगी। दिस विल विद द हेल्प ऑफ द एटीपी इट विल बी अटैच्ड टू द बाइंडिंग साइट एंड इट विल मूव फॉरवर्ड। जब ये फॉरवर्ड मूव करेगा तो देयर इज दिस स्लाइडिंग ऑफ द एक्टिन फिलामेंट, ठीक है? और ये है स्लाइडिंग, बेसिकली जो पावर स्ट्रोक है। पावर स्ट्रोक क्या होती है कि जो मायोसिन जो क्रॉस ब्रिज है, यहाँ पे इसका हेड है, इसके 2 पार्ट्स हुए हैं। फिर से मैं बता रही हूँ, एक एटीपी साइट है, एक एक्टिन साइट है। जब ये इसके साथ अटैच हो जाता है देन देयर इज दिस मूवमेंट ऑफ द फॉरवर्ड, और यह एटीपी और फॉस्फेट निकल जाता है। अब जब इस स्टेट पे होगा तो एटीपी आएगा और वो इसको इससे सेपरेट करेगा। एटीपी का काम इसकी मूवमेंट सेपरेट करना है। फिर यहाँ पे लो एनर्जी लेवल पे ये रहेगा, ये एटीपी जाके इसके साथ अटैच होगा और एडीपी में निकलेगा, और एडीपी फिर इसको ये जो एनर्जी है इसके अंदर स्टोर हो जाएगी और इसको ये पावर स्ट्रोक से फॉरवर्ड करेगा। ये हम लेटर ऑन दोबारा डिस्कस करेंगे। दिस इज वन थिंग, जस्ट लुक एट दिस। क्या हो रहा है इसको? दिस इज जस्ट लाइक द क्लाइंबिंग ऑफ अ रोप, हैंड ओवर हैंड। आपने जैसे आर्मी ऑफिसर देखा होगा कि वो जब ट्रेनिंग करते हैं तो वो रोप के ऊपर एटीपी बाइंडिंग, देन एटीपी उसको टूट रहा है और एटीपी और फॉस्फेट निकल रहा है, देन द हेड इज बाइंडिंग टू अनदर साइड of the actin and is moving forward, और इस तरह ये पावर स्ट्रोक हो रहा है। Can you see this? Yes ma'am. यस मैम। तो ये आपके क्रॉस ब्रिज का कंपोनेंट्स हो गए कि ये आपके ट्रोपोनिन है और ये आपकी कैल्शियम बाइंडिंग साइट्स हैं। ये आपका मायोसिन आया, मायोसिन नेक है, ये एटीपी आया, एटीपी ने एनर्जी इसमें स्टोर कर दी, ये इसको कैल्शियम अटैच हुआ, ट्रोपोमायोसिन को उसने रिमूव किया अपनी जगह से मूव हो गया, तो बाइंडिंग साइट्स आपकी ओपन हो गई, ये अटैच हो गया मायोसिन को ग्लोबुलर हेड एंड इट इज मूविंग फॉरवर्ड एंड दैट इज कॉल्ड एज द पावर स्ट्रोक। गॉट इट? ये हम दोबारा बात करेंगे। ठीक है। यस मैम।
अच्छा ठीक है and we'll meet next week then. Okay? ओके मैम और I hope so आपको ट्यूटोरियल में प्रॉब्लम नहीं होगा. If you get any problem कि आपको समझ नहीं आया तो we'll repeat in the next lecture. And you are free to tell me कि आपको exactly कहाँ पे आप फंस रहे हो और कहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है, because ट्यूटोरियल टाइम छोटा होता है तो मैं बहुत स्लोली जाऊंगी ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए. कोई भी प्रॉब्लम होगी आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा. ओके, अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफ़िज़ मैम. Hello.